वेयर वी कैन यूज पास्ट सिंपल टेंस। हम पास्ट सिंपल टेंस कहाँ यूज कर सकते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट एक्टिविटीज। पास्ट एक्टिविटी मीन्स जो भी काम आपने कुछ टाइम पहले किया हो, सालों पहले किया हो, महीनों पहले किया हो, हफ्तों पहले किया हो, वट एवर द एक्टिविटीज, खाना पीना सोना उठना बैठना पढ़ना, वट एवर जॉब एनीथिंग एल्स, वो सारी की सारी एक्टिविटीज आएंगी जो हो चुकी है इन पास्ट। सो पास्ट सिंपल जो है वो आपकी पास्ट एक्टिविटीज को जाहिर करता है, ठीक है। एंड वी हैव स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड असर्टिव। असर्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा? आई टोल्ड यू अर्लियर कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसमें जुमला पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, बट आप इसको यहाँ अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। सो वी यूज सब्जेक्ट एंड वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आप जो है वो सब्जेक्ट यूज करेंगे और सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। वी नीड सेकंड फॉर्म फॉर पास्ट सिंपल. This is the only tense in among all 12 tenses that he always possesses second form, यानी कि ये एक ऐसा टेंस है नॉर्मली 12 टेंसेस में जो अपने अंदर जब सादा जुमला बनता है तो ये सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सिंपल, you have to use second form of the verb. For example, I saw you somewhere. You can see I have already highlighted a second form with red color. आपने देखा होगा मैंने रेड कलर से इसको ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, सारी सेकंड फॉर्म्स हैं। आई सॉ यू, अच्छा सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सी है। सी सॉ सीन होता है, ठीक है। सो आई सॉ यू समवेयर, मैंने आपको कहीं देखा था। शी फोन्ड मी यस्टरडे, अब ये जो फोन है जो हम यूज करते हैं ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज हुआ है। शी फोन मी यस्टरडे का मतलब कॉल का सेंस है, राब्ता करने का सेंस है, उसने मुझसे राब्ता किया, उसने मुझे कॉल की, लाइक, ठीक है। यू टोल्ड मी रॉन्ग एड्रेस, अब ये टोल्ड क्या है? टेल की सेकंड फॉर्म है, तुमने मुझे गलत पता बताया था। वी हैड अ कार लास्ट ईयर, पिछले साल हमारे पास गाड़ी थी। ये हैड क्या है? ये हैव की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है। दे विश्ड माई बर्थडे फर्स्ट, अब विश्ड का मतलब होता है किसी को लाइक बताना, या किसी को जो है वो लाइक व्हाट शुड आई से इन उर्दू, किसी को उसकी मुबारकबाद देना, वॉट एवर। दे विश्ड माई बर्थडे फर्स्ट, उसने सबसे पहले मुझे जो है मेरी बर्थडे पे विश किया था। किया था बोले या किया था, किया बोले एक ही बात है, ठीक है। या ही मेट मी एट अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट होगा रेस्टोरेंट नहीं होगा, रेस्टोरेंट, ठीक है। वो मुझसे रेस्टोरेंट में मिला था। डॉग बाग्ड एट फायसली, फायसली कहते हैं पुरजोश, बड़े जोशील अंदाज में। बाग का मतलब होता है भौंकना, ठीक है। आई मिस्ड, अब ये मिस नहीं होगा, मिस्ड प्रोनाउंस करते हैं। जैसे आपकी जो मोबाइल पे कॉल आती है और आप रिसीव नहीं कर पाते हैं तो वो मिस्ड कॉल होती है, मिस कॉल नहीं होती है, मिस्ड कॉल। इट प्रोनाउंसेस लाइक मिस्ड कॉल, ठीक है। आई वॉज देयर यस्टरडे, मैं कल वहां था। सो दीज ऑल आर टेंसेस, दे आर एक्चुअली शोइंग पास्ट एक्टिविटीज इन पास्ट, ठीक है। ये सारी वो बातें जो अभी प्रेजेंट में नहीं है, ये सब हो चुकी हैं या ये सारे काम हुए, लेकिन किस में हुए? पास्ट में। अब आप बताना चाहते हैं, सो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। तो फिर आप जो डिलीवर करेंगे सेंटेंस को, तो वो पास्ट सिंपल टेंस के अंदर डिलीवर करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Okay, now I'm giving you time. You can write these questions, structure and definition, and do not write the negative right now. अभी negative मत लिखिएगा, बिल्कुल सामने मैंने negative भी बनाए हैं, लेकिन इसको भी मत लिखिएगा, ठीक है। So write it down. जी guys, done. Shall we go? Yes, Yes, sir. sir. Okay, now you can see that there are some sentences that makes negative sound. So how we would make negative sentence of past simple? So whenever you are going to make any negative sentence in past simple, you have to use first form of the verb. Now you can see the sentences in front of the adjective sentences that they are highlighted with yellow color. Are you listening to me? G, are Yes, you? sir. Okay, thank you. So basically you can see adjective sentence, I saw you somewhere. When you are going to make it negative, so you have to use did not. पास्ट सिंपल में हम डिड नॉट यूज करेंगे और प्रेजेंट सिंपल में हम डू नॉट और डज नॉट यूज करते थे।
But in past simple, we will use did not. Did already second form है. Please remember this point. Did is already second form, and after second form, we cannot use another second form. So that's why we need to find out the first form of verb. हम did के बाद first form use करेंगे, इसीलिए past simple में did not के बाद first form आती है. You can see saw की first form yellow में देखिए क्या लिखी हुई है जी, क्या लिखी हुई है सी. C. यू कैन सी C. फोन्ट, रेड में फोन्ट लिखा हुआ है, येलो में क्या लिखा हुआ है कॉल या पे फोन लिखा हुआ है. Phone. सो टोल्ड की फर्स्ट फॉर्म टेल. यू डिडंट टेल मी रॉन्ग एड्रेस. अच्छा, इसको आप डिडंट पढ़ सकते हैं, डिड नॉट पढ़ सकते हैं, ठीक है. हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव है, विश्ड की फर्स्ट फॉर्म विश है, मैट की फर्स्ट फॉर्म मीट है, बार्क की फर्स्ट फॉर्म बार्क है. सो आपने इस तरीके से इसके नेगेटिव बनाने हैं, पर इसमें आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है. सो नाउ यू कैन ऑल्सो राइट दिस. आप इसको भी लिख लें एक अलग तरीके से, ताकि आपके याद रहे कि असेर्टिव सेंटेंस इस तरह बनते हैं, नेगेटिव इस तरह से बनते हैं. ओके, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. ओके. So now we have discussed assertive sentences and negative sentences. Now we will go for interrogative. Unfortunately, I just made only one sentence of interrogative. Okay, I will. अच्छा, अब जब इंट्रोगेटिव बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, तो आपको पहले भी बताया था कि आप हमेशा पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड. ठीक है. आप देखें यहाँ पे जो 11th है वो है आई वॉज देयर यस्टरडे. ठीक है. अब जब आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, अच्छा फिर क्वेश्चंस का ये नहीं बनेगा, सॉरी, फिर से क्वेश्चन बनेगा वॉज आई देयर यस्टरडे. इसका क्वेश्चन ये बनेगा. लेकिन अगर इससे हटके हम जो बाकी ऊपर सेंटेंसेस हैं उनका बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जस्ट गिव मी मिनट. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन सेंटेंस इज आई सॉ यू समवेयर. सो व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इंट्रोगेटिव तो आप बनाएंगे डिड आई सी यू समवेयर. ठीक है. आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले यूज करना है, बाकी वही फर्स्ट फॉर्म आएगी. नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल के अंदर. ठीक है. ओके, सो फाइजा, हाउ वुड यू मेक क्वेश्चन नंबर 2 इन, आई मीन नंबर 2 इन क्वेश्चन. Okay, sir. Um, did Yes. she phone you yesterday? Okay, did she Phone phone yesterday. yesterday? Okay. G Umair, how would you make number 3rd interrogative? Did you tell me wrong address? Okay. Did you tell me wrong address? Okay, जी. So Laiba, number 4. Did we have a car last year? That's good. Did we have a car last year? Okay, Kulsum, number 6. Number 5, sorry. Did they wish my birthday first? Did they wish my birthday first? That's absolutely perfect. Okay, so इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, इसके इंट्रोगेटिव बनाने होते हैं. So assertive, negative और interrogative. So if you want, you can write these 5 examples. And अब आपने क्या करना है, right now in the class अभी आपने 5 sentences बनाने हैं, your own. You have to create 5 sentences your own and then convert these 5 into negative and interrogative. It means that 15 sentences right now you have to do your own, choice. अपने तौर से खुद से आपने बनाना है. I'm just waiting.